Hello students, welcome you all in science online class. This is Pratima Vishwakarma here. Students, so far we have studied that what is force. So force is nothing but pull or push on an object is called force, and also we have seen when force is caused due to interaction, and also we have seen what are the effects of forces. So there are four effects of forces what we have seen in last video, that is force can change the direction of an object, can change the shape of an object, can change size of an object, can change state of motions. Yes, okay. So, and also we have seen when force applied in same direction, then what is the net force or what is the total force or what is the resultant force. So when force applied in same direction, so force applied in same direction, then then the net force or resultant force or total force will be addition of these two forces. So F is equal to F1 plus F2. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो व्हेन फोर्स अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि एक अलमीरा है, अलमीरा को अगर दो फ्रेंड एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वहां का जो फोर्स होगा, जो टोटल फोर्स होगा वो ऐड हो जाएगा. ओके, सी दिस इज अलमीरा. ओके, सो हियर two friends are trying to shift this almirah from one room to another room. So these two friends applied force in same direction. That's why the almirah also move in that direction. Yes. So what will be the total force? The total force will be F1 plus F2. Understood, students? Now, what happened when force applied in opposite direction? So when force is applied in opposite direction, then three cases will be there. So what those three cases are? See. This is almirah. Okay. So here question is what? What will be the total force or what will be the net force or what will be the resultant force when force applied in opposite direction? So here two friends are here. Okay. One friend is here, one friend is here. So this friend are trying to apply force from this direction and this friend apply force in this direction, means they both are applying force in opposite direction. ठीक है, तो क्या होगा जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो तीन केस ऑकर होगा. फर्स्ट वन इज व्हेन F1 is greater than F2. F1 is greater than F2 means what? What will be the total force in such case? अगर इसका फोर्स ज्यादा है इसके कंपेयर में तो टोटल फोर्स क्या होगा? Then the total force will be F is equal to F1 minus F2. हमने ये देखा था कि when force applied in opposite direction, then the net force or the total force or the resultant force will be the difference between the two forces. Okay, so net force will be F1 minus F2. It means that the objects move in direction of F1. Understood, students? Now, what will be the second case? Second case is if F2 is greater than F1. अगर इसका फोर्स इससे ज्यादा लग रहा है then in such case what will be the total force? The total force will be F is equal to F2 minus F1. ओके स्टूडेंट्स, तो F2 का फोर्स ज्यादा लग रहा है F1 से तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स विल बी द difference between these two forces, so F2 minus F1. It means that objects will move in direction of F2. Understood, students? Now the third case is what here? If both friends apply force equal, then F1 is equal to F2. ठीक है, then in such case what will be the total force? The total force will be 0. The total force will be 0 and such forces are called balanced forces. Okay, so such force are called are called balanced force. Balanced force. ओके स्टूडेंट्स, सो बैलेंस्ड फोर्स कब होगा? जब ये भी फ्रेंड
उतना ही फोर्स लगा रहा है, ये भी फ्रेंड उतना ही फोर्स लगा रहा है, और अलमीरा क्या हो रहा है, ना तो इधर मूव कर रहा है ना तो उधर मूव कर रहा है. सो सच फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स. Understood students? Okay. Now force is caused due to interaction, and interaction कब होगा? When two bodies come in contact with each other. So interaction of the two bodies, interaction between the two bodies may or may not involve direct physical contact. ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल कॉन्टेक्ट से हो भी सकता है. ओके, फिजिकल कॉन्टेक्ट से इंटरेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. सो इन दिस क्लास वी विल सी two forces, that is contact forces and non contact forces. तो वह फोर्स जो कांटेक्ट से हो सकता है और वह फोर्स जिसमें कोई कांटेक्ट नहीं होगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड द टॉपिक इज कांटेक्ट फोर्सेस. Okay students, so next topic is contact force. Contact forces. So contact forces is what? So students, for an object to be pulled or pushed, there should be a contact between the two objects. अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको पुल करना है या पुश करना है तो उस ऑब्जेक्ट को पुल पुश करने के लिए क्या करना है? एक कांटेक्ट होना चाहिए दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इफ अ बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल, इफ आई एम पुशिंग दैट बुक, इफ आई एम पुशिंग दैट बुक, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम टचिंग दैट बुक. ओके, मैं बुक को टच करूँ तभी मैं पुश कर पाऊंगी उसको, या मुझे अगर बुक को मेरे पास लेकर आना है तो उसको बिना टच किए, उसके बिना कांटेक्ट किए बिना मैं बुक को न तो पुल कर सकती हूँ न तो पुश कर सकती हूँ. फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू बी पुल्ड और पुश देयर शुड बी अ कांटेक्ट बिटवीन द two objects. Understood students? So let's take an example of stretched spring. See, this is a figure of stretched spring. So when you stretch the spring, what happened? The two ends of the string should be in contact with the hands of person. ठीक है, स्प्रिंग को आप तभी स्ट्रेच कर सकोगे जब उसका एंड किसी के कांटेक्ट में आएगा. ठीक है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा. ओनली व्हेन यू कैन स्ट्रेच द कॉइल्ड स्प्रिंग. Understood students? Next, second figure, see, this is a kicking football. So here when a person kick the football, it means that that person comes in contact with the football, then only the football moves. Yes, so here again this is a contact. Here there is a contact between the two objects. Okay students, next let's take an example of third figure. So this is the figure for pulling cart. So pulling cart also requires contact with the object. Understood students? So किसी भी objects को pull या push करने के लिए contact होना बहुत जरूरी है. So what is contact force? Contact force is a force which acts only when. So let's define contact force. Contact force is a force which acts only when only when the objects only when the objects are in physical physical contact physical contact with with each other with each other is called contact forces. So contact force is a force which acts only when the objects are in physical contact with each other. So जब तक physical contact नहीं होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में तब तक contact force takes place नहीं करेगा. Understood students? So हमने examples देखे. First one is coiled spring, second one is kicking football, third one is pulling cart. So in all these examples contact force is there. Contact force is applied between the two objects. Understood students? Now let's take some more typical examples of
contact forces. Okay students, so now let's see some typical contact forces, and first typical contact forces is muscular force. Muscular force. Okay students, so we all have muscles in our body, animal also have muscles in their body. Okay, so if I give an example that the bucket is filled with water and you have to lift that bucket, so without applying muscular force, will you be able to lift that bucket? No. जब तक आप उस पे एक फोर्स अप्लाई नहीं करोगे या आपका मसल्स जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तब तक आप उस भरी हुई बाल्टी को उठा नहीं सकते हो. Yes, so your body exerts a force by muscles and that force is called muscular force. Similarly, animal also use their muscles to do various activities like what? Like plowing the field, then carry the heavy objects, then pulling carts. Okay, so animal also exert some force by their muscles. So what is muscular force? Muscular force is the force, the force which is which is exerted exerted by muscles by muscles of human human and animals. Human and animals is called muscular force. Understood students? So we use our muscular force during running, during walking, during kicking, during lifting the heavy objects. Okay, so ये सब काम को करने के लिए हम अपने मसल्स का यूज करते हैं एंड हमारा मसल्स क्या अप्लाई करता है? फोर्स अप्लाई करता है, तब जाके हम ये सब काम कर पाते हैं. सेम फॉर animal also. Understood students? So in these examples, muscles are in direct contact with the object which results in force, and that force is called muscular force. I hope you understand this topic very clearly. Okay, so now come to the next typical contact force, that is frictional force. Okay students, now the second typical contact forces is frictional frictional force. Frictional force. So what do you mean by this friction? Friction क्या होता है? Friction जिसे हम घर्षण कहते हैं, that is the friction. So friction force takes place only when the two surfaces are in contact. So force acts only when two surfaces are in contact, which opposes the motion of one body over the other, is called frictional force or is called force of friction. Okay, so let's define this term frictional forces. So when two surfaces are in contact, then force acts between two surface surface which which opposes which opposes the the motion of one body over the other body over the other body is called frictional frictional force. Frictional force. Okay students, so frictional force is what? When two surfaces are in contact, then force acts between these two surfaces which opposes the motion of one body over the other body is called frictional force. Opposes means विरोध करना. ठीक है, तो जब भी कोई object
ओके जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट जब भी किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस से कांटेक्ट में है तो वहाँ पे क्या है फोर्स टेक्स प्लेस कर रहा है एंड दैट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फोर्स जो टेक्स प्लेस कर रहा है दो सरफेस के बीच में वो क्या करता है इट अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर। उसकी उस ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकता है या विरोध करता है उस ऑब्जेक्ट की मोशन में। फॉर एग्जाम्पल बॉल इज रोल्ड ऑन द ग्राउंड। So when you push that ball, the ball continuously moves. Is that ball continuously moves on that ground? No. After certain interval of time, the ball comes to rest. So we generally perceive that ball comes to rest by itself, but actually there is a force which is applied by that ground on that ball in the direction opposite to its motion, and then the ball stops and then the ball comes to rest after certain interval of time। तो बॉल क्या है बॉल ग्राउंड पे रोल कर रही है आपने एक पुश दिया बॉल को तो बॉल ग्राउंड पे रोल कर रही है लेकिन कुछ समय बाद बॉल रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्राउंड जो है एक फोर्स अप्लाई कर रही है उस बॉल की डायरेक्शन के अपोजिट में। ठीक है बॉल की डायरेक्शन इस तरफ मूव कर रही है लेकिन ग्राउंड है जो एक फोर्स अप्लाई कर रही है वो भी इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रही है इसलिए बॉल क्या है कुछ समय बाद रुक जाता है। Okay, so that force which is applied by the ground on the ball is called frictional force। Understood students? Okay, let's take one more example। Friction also help us to walk on ground। Okay, इसी friction की वजह से हम ground पे walk करते हैं। Let's take one more example that we can hold any objects in our hand just because of friction between the skin of our palm and that object। अगर यही friction नहीं होता तो जो object हम hold कर रहे हैं वो slip करके नीचे गिर जाता। Okay, so this is the frictional force। So when frictional force takes place, it acts between the two surface, okay, and also the force of friction is due to the roughness of surface in contact, okay, and if surface is smooth then the smooth surface exert lesser force of friction than the rough surface। आ रहा है समझ में अगर सरफेस स्मूथ होगा तो वो सरफेस स्मूथ सरफेस लेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा एज कंपेयर टू रफ सरफेस। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? so this is what is a frictional force। okay so this frictional force and muscular force they are nothing but contact forces। तो इनमें हमने देखा कि यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट हो रहा है। सो सच frictional force and muscular force are an example of contact forces। I hope students you have understood this topic clearly। Now let's come to the next topic that is non-contact force। Contact force हमने देखा contact force is what? Contact force is a force which acts only when the objects are in physical contact with each other। ओके तो हमने कांटेक्ट फोर्स में क्या देखा जब ऑब्जेक्ट्स फिजिकल कांटेक्ट होता है जब ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है तब कांटेक्ट फोर्स टेक्स प्लेस करता है। तो उसके हमने एग्जांपल्स भी देखे एक मस्कुलर फोर्स एंड सेकंड वन इज द फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स ऐसा फोर्स है जिसमें फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती बट स्टिल देयर इज अ फोर्स टेक्स प्लेस। ओके so let's move to next topic that is non-contact force। Okay students, so let's start next topic that is non-contact forces। Non-contact forces, non-contact forces। See, so non-contact force means what? In which there is no physical contact। Okay, if there is no physical contact, that is non-contact forces। The force which arise without any physical contact with each other, that is called non-contact forces। So let's understand this topic with the help of an example। So here also some typical non-contact forces। So first one is magnetic forces। Magnetic forces। So students, you all have played with magnet in your childhood। Does magnet attract other magnet? Yes,
लेकिन क्या वो मैग्नेट वहां पे टच हो रहा है उस मैग्नेट को या उसके कांटेक्ट में है? नहीं, बट स्टिल मैग्नेट अट्रैक्ट दैट मैग्नेट. व्हाई? Because it have magnet attracts other magnet just because it experiences a force, and that is called magnetic force, and this is an example of non-contact forces. Understood, students? So you all know magnet have two poles. So when we say that magnet attract, when we say that magnet repels, you all know magnet have two poles, and what those two poles are? Those two poles are north pole and south pole. Okay, north pole and south pole. So when we say that magnet attract each other, when the poles are opposite, when the poles are opposite, then only we say that the magnets attract each other. Okay, so this is the one magnet, this is another magnet. Okay, so magnet have two poles, north and south. So this magnet also have two poles, north and south. Okay, so when magnet attracts, when two opposite poles are attract each other, so north and south here, so these two poles attract each other, or in other way we say that when the poles are unlike, unlike poles, unlike poles attract, attract each other. Okay, when the poles are opposite, then we say that the magnet attracts each other. Okay, and when we say that magnet repel each other, when there is a like pole. Like pole means what? See, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. सो अब हम देख रहे हैं कि पोल मैग्नेट कब रिपल करता है, जब पोल्स एक जैसे होते हैं. ओके, सो हियर दिस इज ऑल्सो साउथ एंड दिस इज नॉर्थ. सो ये पोल्स क्या है? पोल्स लाइक है. सो लाइक पोल्स रिपल ईच अदर. रिपल मीन्स एक दूसरे से दूर भागना, एंड अट्रैक्शन मीन्स come closer to one another. Okay, so this is how the magnet attract and magnet repel. Magnet repel. Okay, so magnet attracts means what? The magnet, when magnet is brought closer to another magnet, then the magnet attracts. So here the magnet experiences a force, and that force is called magnetic force. Understood, student? So when magnetic force occurs, when one magnet brought closer to another magnet. Okay, so magnet attracts other objects, or magnet attract other iron objects without being contact, because magnet generates magnetic field around it. Magnetic field around it. ओके, तभी ये मैग्नेट क्या करता है? दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. आ रहा है समझ में? मैग्नेट दूसरे ऑब्जेक्ट्स के जब पास में रखा जाता है, तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. क्यों? बिना उसको टच किए, बिना उसके कांटेक्ट में मैग्नेट, ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्यों अट्रैक्ट करता है? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, मैग्नेट generates a magnetic field around it. Okay, that's why it attracts other iron objects or other magnetic material towards it without being contacted. Such force is called magnetic force. So magnet क्या करता है? एक force experience करता है, एक force exert करता है, तब वो दूसरे magnet को attract करता है बिना उसके contact में. And this is an example of non-contact forces. Understood, students? Okay. Now move to second non-contact forces, that is gravitational forces. So next non-contact force is gravitational, gravitational, gravitational forces. Gravitational forces. Okay, students, see what I am doing here. Yes, I am not playing with this chalk. I am just explaining you, trying to explain you what is this gravitational force. So here मैंने क्या किया, मैं चौक को ऊपर की तरफ फेंक रही हूँ, लेकिन ये चौक नीचे की तरफ गिर रहा है. Why? Why this chalk fall on the ground? Is there any force act on it, or can this happen without force acting on it? So what type of force is this? This is a gravitational force. Okay,
जैसा कि हमने देखा है कि जो पत्ते होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल्स टू द ग्राउंड when they detached from the plant. Similarly, you also played with coin, pen. So when the coin and pen slips off your hand, they also fall on the ground. Yes, why this happens? Can this happen without force acting on it? No, but there is a force. So what type of force is this? So that is the gravitational force. तो अर्थ एक क्या लगा रहा है? एक फोर्स लगा रहा है अर्थ. अर्थ एक फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या है? पुल हो रहे हैं अर्थ की तरफ. ओके, अर्थ क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स क्या है? उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. And that force is called gravitational force. So how can you define gravitational force? The force of attraction between the force of attraction between the two objects is called gravitational force. So all objects have tendency to fall towards the earth because earth pull the objects or attract the objects, or in short we can say that it is due to the force of earth. Okay, earth एक force apply कर रहा है, that's why all objects fall directly towards the ground, instead they go up. ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना कि अभी मैं ये चौक फेंक रही थी, चौक ऊपर चला जाए सीधे. ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, कभी होता भी नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ऊपर की तरफ थ्रो करो तो वो ऊपर की तरफ चला जाए, नीचे ना गिरे. हमेशा हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स अगर हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वो नीचे ही आके गिरता है. ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अर्थ क्या कर रहा है? एक फोर्स अप्लाई कर रहा है एंड दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ पुल कर रहा है ऑब्जेक्ट्स को, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ उस ऑब्जेक्ट्स को. सो दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. Understood students? So this gravitational force is also a kind of non-contact forces. Understood students? Okay. So here what we saw that there is no contact between the objects. जैसा कि मैंने बताया कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आम का पेड़ है, ठीक है, तो वो आम को हमने तोड़ा नहीं, ठीक, आम को हम अपना कोई कांटेक्ट नहीं दे रहे हैं कि हम उसको तोड़ रहे हैं, लेकिन आम को हम देख रहे हैं कि आम अपने आप नीचे गिर रहा है. व्हाई इज दिस सो? बिकॉज अर्थ पुल दैट मैंगो और अर्थ attract that mango towards it. That's why the mango falls directly on the ground and there is no physical contact between that two. Okay students? So these are the non-contact forces. So let's move to the third force, that is electrostatic force. Okay, and this is also non-contact force. Students, this is a figure of gravitational force. Here boy jumps on trampoline and fall towards the earth. And in this figure, the if tap is open, water flows down or water flows towards ground just because of gravitational force. So students, third force is electrostatic forces. Okay students, now let us try to understand this term electrostatic forces through an activity which is given in your textbook. So what you have to do, choose or take a straw, okay, and cut that straw into two equal pieces, and one piece of the straw is hang with the edge of the table. See, this is the table, okay. Now at the edge of this table hang one piece of the straw, okay. So this is one piece of the straw. Now hold the other piece of straw and rub its free end with paper or a cloth, okay. तो दूसरा जो स्ट्रॉ होगा, दूसरा जो स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ तो आपने यहाँ पे हैंग किया है टेबल पे, लेकिन जो इसका दूसरा पीस है स्ट्रॉ का, उसको क्या करना है, उसके एक एंड को रब करना है किसी कपड़े पे या किसी पेपर पे, ठीक है.
Now what you will observe? You will observe that that straw gets electrically charged. ठीक है, तो वो straw क्या हो जाएगा? वो straw charged हो जाएगा. Now bring that charged straw to uncharged straw. This is uncharged straw. ये क्या है? ये uncharged है. और दूसरा जो straw था वो क्या हो गया? वो charged हो गया. After rubbing it, that straw gets charged. So when the charged straw come closer to uncharged straw, what happen? There will be electrostatic force between these two straws. Okay students, so here the force is generated. Okay, the force is exerted by this straw and that is called electrostatic force. So how will you define electrostatic force? Electrostatic force is a non-contact force, a non-contact force arises when the two or more objects get electrically 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 charged. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, सो जब दो और दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स चार्ज हो जाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि कोई कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, बट स्टिल देयर इज अ फोर्स exerted by the objects. Okay, and that force is called electrostatic force. Understood students? So here one more example I can give you. See, when you rub comb on your hair 3 or 4 times, तो क्या होगा? जब आप उस कॉम को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाओगे तो जो कागज का टुकड़ा है वो उस कॉम से अट्रैक्ट होने लगेगा. ओके, सो हियर अगेन व्हेन यू रब दैट कॉम ऑन योर हेयर, द कॉम गेट्स चार्ज्ड. वो कॉम क्या हो गया था? कॉम चार्ज हो गया था, और चार्ज होने के बाद वो कॉम पेपर्स के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा था. ओके, सिमिलरली वन मोर एग्जांपल. टेक 2 balloons and rub those 2 balloons to each other. Now after bringing those 2 balloons closer to each other, what you'll see? You will see that the balloons are repelled to each other. Okay, so overall we can say that electrostatic forces are attractive in nature as well as repulsive in nature. ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्ट भी करता है और रिपल भी करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स आर अट्रैक्टिव इन नेचर. Understood students? Okay students, one more thing I would like to tell you that similar to magnetic force, electrostatic force are also seen when the two charged bodies are kept sufficiently closer to each other. If they will kept apart from each other, then neither the force of attraction takes place nor the force of repulsion. ओके, तो जैसा कि हम मैग्नेट में देखें कि अगर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के क्लोजर लाया जाएगा तभी वो मैग्नेट उस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा. ऐसा तो नहीं होगा कि एक मैग्नेट यहाँ है दूसरा मैग्नेट वहाँ है तो ये मैग्नेट दूर से ही उसको अट्रैक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है. यस, तो वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी हम देखते हैं कि जब दो चार्ज्ड बॉडीज, when two charged bodies are kept sufficiently closer to each other, then the force of attraction or repulsion takes place. Okay students, so that's all for contact force and non-contact force. Students, I think and I hope you understand this topics very clearly. Now we will meet in our next video with next topic of the same chapter. Till then, keep watching it, stay home, stay safe and be happy. Thank you.